Hello everyone, a very warm welcome to Novation. I am Shantanu and I welcome you all to the second part of our 2021 Business Awareness Series जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कई सारे important MCQs के बारे में which will be related to the business world. It may be banks, it may be various other companies. So this is going to be a very important session for all your upcoming exams. Hence I request you कि आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और जो लास्ट में मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस दूंगा उनको भी आप प्लीज़ अटेम्प्ट करिएगा. ऑलराइट, सो विद दैट विल स्टार्ट टुडेज सेशन. The first question for today: in which of the following cities India's first leather park is located? Okay, so here the correct answer is B, Kanpur. Friends, Kanpur city जो यूपी में है, it is very famous for its leather production. So let's see the PTN. So more than around 150 tanneries are expected to work in this leather park, and they are going to produce world-class leather items including shoes, jackets, and other export quality accessories. Now this is going to provide around employment to around 50,000 people directly and around 1.5 lakh people indirectly. Okay. The Reserve Bank of India has appointed an external firm to audit which of the following banks' IT infrastructure. So किस बैंक के IT infrastructure को audit करने के लिए RBI ने एक external firm को hire किया है. So here the correct answer is C, HDFC Bank. So friends, HDFC Bank के बारे में मैं आपको कुछ background बता देता हूँ. So recently there have been a lot of outages in the net banking and all the online services which HDFC Bank provide, like mobile banking, payment utilities, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा. सो कई बार इसमें आउटेजेस हुए, बंद हुआ ये सर्विस. सो आरबीआई वाज रियली अपसेट विद दिस काइंड ऑफ सर्विस बाय एचडीएफसी बैंक बिकॉज एचडीएफसी बैंक इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर. सो अगर वो ऐसा बिहेव करेंगे देन इट इज रियली नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द कस्टमर्स. सो दैट्स वाई आरबीआई हैज अपॉइंटेड दिस एक्सटर्नल ऑडिटर एंड दिस एक्सटर्नल प्रोफेशनल आईटी फर्म इज गोइंग टू कैरी आउट अ स्पेशल ऑडिट ऑफ द एंटायर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. के आरबीआई के इस नोटिफिकेशन के बाद क्या एचडीएफसी बैंक ने कुछ सुधार किया है अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में या नहीं किया है, वही ये फर्म ऑडिट करेगी. ऑलराइट, नेक्स्ट इज which bank has launched a special savings account scheme for children below 18 years of age named as Fed First? So friends, here the correct answer is C, Federal Bank. So this special savings account is only for the children below 18 years of age so that they can learn the importance of money management. कैसे वो कम उम्र से ही मनी को अच्छे से मैनेज करना सीख सकें. ये अकाउंट में कई सारी सुविधाएं होंगी, लाइक दे हैव अ डेली कैश विड्रॉल लिमिट ऑफ 2500 इन एडिशन टू फ्री ऑनलाइन फैसिलिटीज लाइक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल अलर्ट्स, ईमेल अलर्ट्स एटसेट्रा. ओके, नेक्स्ट इज Bharat Electronic Limited (BEL) has entered into a contract with which of the following countries' defense organization? So friends, BEL is basically an Indian defense public sector company and it has entered into a contract with which of the following countries' defense organization? So here the correct answer is D, Russia. Let's see the PTN. So BEL has entered into a contract with Rosoboron Export Russia for setting up industrial facilities for the manufacture of wide range of aviation hoses at BEL Optronic Devices Limited in Pune. So it is a subsidiary of BEL. यहाँ पर वो aviation hoses बनाने के लिए ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है रशिया के साथ. आगे बढ़ते हैं. Which company recently signed a memorandum of understanding with the government of India as a part of PM Swanidhi scheme recently? Friends, here the correct answer is A, Zomato. सो स्विगी ने पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इसमें पार्टनरशिप कर ली थी स्वनिधि स्कीम में, बट जोमेटो ने अभी रिसेंटली फरवरी में कराया. सो जोमेटो विल रन अ पायलट प्रोग्राम बाय ऑनबोर्डिंग 300 स्ट्रीट वेंडर्स अक्रॉस 6 cities: भोपाल, लुधियाना, नागपुर, पटना, रायपुर, वडोदरा. एंड स्विगी इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. सो जोमेटो इज गोइंग टू सर्विस इट्स कस्टमर विद द फूड ऑफ स्ट्रीट फूड वेंडर्स. ओके, सो पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है फ्रेंड्स? सो this scheme is only for street vendors जिनको लोन लेना है around 10,000 rupees का. They can go and register themselves on this website and they can get the money in the form of a loan. Okay, micro loan basically. आगे बढ़ते हैं. Next is name the insurance company which has launched the campaign named Salute to the Caregivers, एक नया नजरिया to support cancer survivors.
Friends, here the correct answer is C, Bharti AXA General Insurance Company. So Bharti AXA General Insurance believes that all caregivers, that is friends, family and others, play a significant role to win the battle against cancer. जो भी कैंसर सर्वाइवर्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, जो जिन्होंने उनकी केयर करी है, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए ये कैंपेन लॉन्च किया है. द इम्प्लिसिट एसेंस इज बेस्ट कैप्चर्ड बाय द टैगलाइन. और इस कैंपेन की टैगलाइन क्या है? इस जंग में हम संग हैं. ओके. Next, Siemens has signed an MOU with which of the following institutes for the setting up of a digital transformation lab? Friends, here the correct answer is both A and C, IISc Bengaluru and Central Manufacturing Technology Institute, Bengaluru. So IISc is Indian Institute of Science. Okay, so my correct answer will be both A and C. So PTN labs, these labs, digital transformation labs, are going to focus on the development of IoT, that is Industrial Internet of Things, Industry 4.0 enabled products and technologies. Next, digital payment app PhonePe has partnered with which of the following banks on a UPI multi-bank model? So ये कौन सा मॉडल है, ये हम देखेंगे फ्रेंड्स. Here the correct answer is B, Axis Bank. So let's see the PTN. So the multi-bank model, that is, it aims to offer its user the ability to build and use multiple UPI IDs with at the rate AXL handle of Axis Bank. So अभी तक एक ही UPI ID आप ले सकते हैं, but with this new partnership, the customers of PhonePe can have multiple IDs with the at the rate AXL handle. Okay, earlier only one UPI ID per bank could be generated and used by the user. So this is another facility which PhonePe is now providing. Next is, which of the following web portal has been integrated with Arogya Setu app? So friends, इस ऐप के साथ आरोग्य सेतु इज रिलेटेड टू कोविड. सो जो भी इसके साथ इंटीग्रेशन होना चाहिए वो कोविड रिलेटेड ही होना चाहिए. सो द आंसर इज वेरी सिंपल. द करेक्ट आंसर इज सी, कोविन, विच इज द पोर्टल वेयर पीपल कैन रजिस्टर देमसेल्फ टू गेट कोरोना वायरस वैक्सीन. Let's see the PTN. So the integration with CoWIN portal, COVID Vaccine Intelligence Network, will enable users to download vaccination certificates after they have received at least one dose of COVID-19 vaccine. So वो अपना certificate easily download कर सकते हैं only using Arogya Setu app. Okay. Next is, who has been recently appointed as the MD and CEO of Tata Motors? So this is another important question. Here the correct answer is Mark Listosella. So you can see the person in the photograph. Tata Motors has appointed Mark Listosella as the Chief Executive Officer and Managing Director of the company, and he'll join on this post from July 2021. He succeed Günther Bützek. Okay, so इनसे पहले Günther थे CEO और MD Tata Motors के. आगे बढ़ते हैं. Tamil Nadu government has signed a memorandum of understanding with which of the following companies to set up a facility for manufacturing mobile components? So किस कंपनी के साथ तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है? वो है सी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स. So let's see the PTN. So जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है मिस्टर नटराजन चंद्रशेखरन, इनका नाम भी आप प्लीज याद रखिए. उन्होंने कहा है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ₹4684 करोड़ प्रोजेक्ट इन कृष्णगिरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल एनक्लोजर्स फॉर मोबाइल फोन्स कैन क्रिएट जॉब्स फॉर अराउंड 18,250 people. Okay. Next is, which state is the top destination for foreign direct investment from United Kingdom as per Grant Thornton Bharat's Britain Meets India report? Friends, here the correct answer is B, Maharashtra. So United Kingdom से सबसे ज़्यादा FDI किस स्टेट में गया है? वो है महाराष्ट्र. इन 2019-20 इस साल की हम बात कर रहे हैं. So let's see the PTN. So according to this report, Britain Meets India, it is developed by CII and Grant Thornton. Among Indian state, Maharashtra is the top investment destination. और उसके बाद आते हैं हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना and कर्नाटका. Okay. Next, who recently became the brand ambassador of Unacademy? Very important question, friends. Brand ambassadors काफी important होते हैं. Okay, so here the correct answer is C, सचिन तेंदुलकर. Recently, शायद 2-3 दिन पहले ही ये न्यूज आई है कि Unacademy में सचिन तेंदुलकर कुछ इन्वेस्ट भी करेंगे. He will be having a strategic partnership with Unacademy, and he has also become the brand ambassador of this Bangalore-based education tech startup. So this is a very important question. Moving forward. Which of the following companies bagged the BioAsia's Genome Valley Excellence Award for 2021? Another important question, guys. जो भी awards related questions होते हैं उनको please आप ध्यान से नोट करिए. Here the correct answer is A, Bharat Biotech.
okay, which has actually made a मेड इन इंडिया वैक्सीन. सो भारत बायोटेक के चेयरमैन कौन है? प्लीज आप नाम याद रखिए, डॉक्टर कृष्ण एला, एंड द हेडक्वार्टर ऑफ भारत बायोटेक इज इन हैदराबाद. ऑलराइट, सो नाउ फ्रेंड्स, वी आर ऑन द असाइनमेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. आप मुझे बताइए, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज द हाइएस्ट claim settlement ratio for financial year 20 as per IRDAI, that is Insurance Regulatory Development Authority of India annual report of 1920. Next, who recently became the MD and CEO of Central Bank of India? So ये दोनों क्वेश्चन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. ओके. So friends, we have come to an end to this exciting session. I hope the session was fruitful, and thanks a lot for watching the video till the end. If the video has helped you, please give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to Novation for more such important videos on business awareness, current affairs, static GK, verbal ability, etc. And friends, also visit novation.in. यहाँ पर आप कई सारे quizzes दे सकते हैं ऑनलाइन, और अगर आपको Novation का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप Novation को डोनेट करके सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज Novation really needs your support. Alright friends, so with that I'll close today's session. I'll meet you again next time. Until then, bye bye, and please take care.